Let's start the second chapter, that is making of the Constitution of India. सबसे पहला है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. लास्ट वीडियो में हमने जैसे देखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सेटअप होता है एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मेकिंग ऑफ असेंबली, तो ये सारी चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में देखा. डेट वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो बात है वो स्टार्ट कहाँ होता है, वो होता है भाई M.N. रॉय. So it was in 1934 the idea of Constituent Assembly in India was put forward by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. 1935 Indian National Congress for the first time officially, तो क्या है 1935 में officially INC demanded Constituent Assembly to frame Constitution of India. Now यहाँ तक क्लियर है. So in 1938 Jawaharlal Nehru on behalf of INC declared the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. The demand was finally accepted principle by the British government in what is known as August Offer of 1940. And 1942, Stafford Cripps, a member of cabinet, came to India with a draft proposal of cabinet British government on framing of the independent constitution to be adopted after World War II. तो सबसे पहले जो डिमांड वाज फाइनली जो एक्सेप्ट होता है वो आपका होता है अगस्त ऑफर. Now, the Cripps proposal was rejected by the Muslim League, which wanted India to divide into two autonomous states with two separate constituent assembly. Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected the idea of two constituent assembly, तो दो constituent assembly का idea reject करते हैं, but it put forth a scheme for constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. तो ऐसा ये रहा हिस्ट्री constituent assembly का. ऐसे समझ सकते हैं. तो सबसे पहले अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट होगा, फिर दो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बात होता है और ठीक है, और ये आपको क्रिप्स प्रपोजल में आएगा, इसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे और देन कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है इसमें फाइनली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का स्थापना का बात होता है फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो ये रहा. नाउ सेकंड टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर. तो कब है आपका नवंबर 1946. तो ये आपका एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, नवंबर 1946. और किसके अंडर बनता है? सो दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान. तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहले आप अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट होता है, लेकिन बनता किसके अंदर है? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनता है. और टोटल स्ट्रेंथ जो असेंबली का होगा वो कितना था? 389, जिसमें से 296 वर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 टू द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, ये हुआ डिवीजन. सो आउट ऑफ 296 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 292 मेंबर्स वर drawn from the 11th province and 4 from the 4 chief commissioner province from each other. Now each province and princely states or group province, ठीक है, small states, were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly one seat was to be allotted for every million population. 10 लाख के लिए इसमें क्लिक किया गया. Now seats allotted each British province were divided among the three principal communities, Muslim, Sikhs and general, all except Muslim and Sikhs in proportion to their population. Now, the representative of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of single transferable vote system. तो ये देख सकते हैं हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है इन यूपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे वो क्या थे? नॉमिनेटेड थे या इलेक्टेड थे? तो सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी elected. तो यहाँ देखिए elected by the member of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be done by method of this representation. Now the representative of princely states were to be nominated by the heads of the princely states. तो ये जो princely states जा रहे हैं तो partially nominated, partially elected, not fully elected, not fully nominated. ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकल के आता है not fully nominated, not fully elected. ठीक है, तो ये one major clearance. Now it is thus clear that the Constituent Assembly was to be partially elected. देखिए partially elected and partially nominated, यही बात मैं बोल रहा था और यही सेम स्टेटमेंट इज आस्क्ड इन एग्जाम. ठीक है,
Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of provincial assembly, who themselves were elected on the limited franchise. Now, election for 296 seats allotted to British Indian province were held on, ये आपको 1946 में होता है, and INC won 28 seats, Muslim League 73 seats, and the small groups independent got remaining 15 seats. However, 93 seats allotted to princely estates were not filled as they decided to stay away from the Constituent Assembly. ये तो withdraw कर देंगे. Although the Constituent Assembly was not directly elected by the people of India on the basis of adult franchise, the assembly comprised representative of all sections of Indian society, जो आपका हिंदूज है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियन, SC, ST, including women of all these sections. So the assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi. Now हम लोग वर्किंग ऑफ CA पे आते हैं. तो वर्किंग देखिए, फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग ये आपको होता है 9 दिसंबर 1946, और ये बार बार क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेगा. The Muslim League boycotted the meeting and insisted on separate state of Pakistan. The meeting was thus attended by only 211 member. And Dr. Sachidanand Sinha, the oldest member of, was elected as the temporary president of the assembly, following the French practice. So later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of assembly. Similarly, both, अब यहाँ देखिए कौन कौन है साथ उनके, H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was elected as the vice president of the assembly. In other words, the assembly had two vice president. हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे आते हैं. क्या है ये? सो दिसंबर 13 1946, तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946. दिस इज इंपॉर्टेंट. Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of constitutional this structure. It read, क्या है ये? Assembly declared its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign, to draw up her future governance, a constitution, wherein territories that now comprise British India, territories that now from the United States and such other parts of India as outside India, and the states as well as other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be uniform of them and all. Now, even in the state territory, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly, and thereafter, according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous unit together with statutory power and exercise all power. अब यहाँ है, wherein all power and authority of the sovereign independent India, it constituent part and organ of the government are derived from the people. Now, when small where shall be guaranteed and secured to all people of India justice, social, economic, political equality of status, opportunity, and better and before the law, freedom of thought, expression, belief. ये सारा हो गया. When adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal area, depressed and other backward classes. ठीक है. By shall be maintain the integrity of the territory. तो ये सब normal चीजें. The ancient land retains its rightful and honored place in the world, and it make a willing contribution to the promotion of world peace and welfare of their mankind. ठीक है. तो this resolution was unanimously adopted by the assembly on कब होता है? 22 जनवरी 1947. ये important है. 22 जनवरी 1947 this was adopted, unanimously adopted. ठीक है. तो ये चीज को हमें समझना है. कब adopt होता है? तो 22nd January. So it influenced the eventual shaping of the constitution through all its subsequent stages. It modified version from the preamble of the present constitution. Now, changes by the Independent Act. So the representative of the princely estates who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. On April 28, 47, representative of 6 estates were part of the assembly. So after the acceptance of the Mountbatten Plan, the 3rd June Plan for the partition of country, the representative of the most of the princely estates took their seats in the assembly. The member of the Muslim League from the Indian Dominion also entered the assembly. तो यहाँ देखिए 1947 का जो made 3 changes in the position क्या है? The assembly was made fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. अब यहाँ देखिए, ये देखिए, the assembly also became a legislative body. In other words, 2 separate functions were assigned to the assembly
making constitution for free India, enacting ordinary laws for the country. These two tasks were to perform on separate days. Thus, the assembly became the first parliament of Free India Dominion legislature, where whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Rajendra Prasad, and when it met as a legislative body, it was chaired by the GB Malvankar, Mav Lankar, GB Mav Lankar. तो डुअल रोल को समझिए. These two functions continued till 26 January 1949. Now, the Muslim League member hailing from the areas including the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down to 299 as against 389 originally fixed in 1946 under cabinet mission plan. तो ये आपको 299 पे आ जाएगा. Now the strength of Indian provinces, formerly British province, was reduced from 296 to 222, 229, and those of princely state from 93 to 70. The state-wise membership of the assembly as on December 31. तो ये दिया हुआ है. Now other functions performed. यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है. सबसे पहले जो होता है, it adopted a national flag on 22 July 1947. ये कौन क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करता है. एडॉप्ट नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950. तो ये चीज आपको स्टेट पीसीएस में रिपीटेडली मिलने को देखने को मिलेगा. तो क्या है, 22 जुलाई को आपको नेशनल फ्लैग एडॉप्ट होता है और नेशनल एंथम एडॉप्ट होता है 24 जनवरी को. ठीक है. नाउ इट इलेक्टेड, अब देखिए नेशनल सॉन्ग है वो आपको आएगा 24 जनवरी 1950. तो सॉन्ग एंथम इज ऑन सेम डेट, बट जुलाई 47 में ही आपको नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस के पहले एडॉप्ट होता दिखेगा. इस चीज को समझते हैं. नाउ इट इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950. तो ये कब इलेक्ट होते हैं, 24 जनवरी 1950. तो 11 सेशन होता है टोटल, और कितने दिन के लिए, 12 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज. तो ये यहां से भी आपको क्वेश्चन बार बार मिलता है. Now the constitution maker had gone through the constitution of about 60 countries. देखिए लोग बोलते 4-5 नहीं, 60 countries, 60 countries. तो इस चीज को समझना है कि अगर कोई भी चीज का प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक जगह से नहीं करिए, बहुत सारे जगह से करिए. इस चीज को सोर्स को प्रिपेयर करिए अपना. एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज. ठीक है. एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है वो होता है आपका 64 लाख खर्च हो जाता है हम बनाने में. On 24 January 1950, the Constituent Assembly held its first session, final session, जो कि है final session, and however did not and continued as a provincial parliament of India from January 26, 1950, till the formation of new parliament after the first general election 1951-52. तो हम लोग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे आते हैं. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटी टू डील विद द डिफरेंट टास्क. तो ये डायरेक्ट इस पे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. यूनियन पावर कमिटी आपको जवाहरलाल नेहरू के पास है. यूनियन, ये जहाँ यूनियन लगा वो समझिए जवाहरलाल नेहरू के पास है. प्रोविंशियल सरदार पटेल के पास है. ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर. एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल. तो एडवाइजरी फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो ये आपको सरदार पटेल के पास ही है, सरदार पटेल के पास ही है. ठीक है. And this committee had following 5 subcommittee. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स ऑन सम कमिटी जेबी कृपलानी, मुखर्जी है यहाँ पे, फिर गोपीनाथ बारदोली है जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए है, एवी थाकर है, ये आपको पार्सली इंक्लूडेड एरिया ऑफ असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया का सब कमिटी हो गया. ये था. नाउ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी राजेंद्र प्रसाद के पास है. स्टेट कमिटी नाउ अगेन जवाहरलाल नेहरू. एंड स्टीयरिंग कमिटी, यानी स्टीयरिंग मतलब होता है आपको ड्राइविंग व्हील, स्टीयरिंग कमिटी, तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद के पास है. कुछ माइनर कमिटीज को देख लेते हैं. फाइनेंस एंड स्टाफ अगेन विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी के एम मुंशी. क्रेडेंशियल कमिटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. हाउस कमिटी पटाभी सीतारामैया. एंड कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंस पटाभी सीतारामैया. प्रेस गैलरी कमिटी उषा नाथ सेन. एडहॉक कमिटी सिटीजनशिप एस वारदरा चारी, नॉट असेंबली मेंबर. ठीक है. और ड्राफ्टिंग कमिटी पे आते हैं. तो यहाँ से वन क्वेश्चन इज फिक्स्ड ऑलवेज among all the committee of the Constituent Assembly. Most important committee was drafting committee set upon कब होता है, 29 अगस्त. Let me highlight 29 अगस्त 1947. ठीक है. And it was this committee that entrusted with the task of preparing a draft new constitution. It consists 7 members. और ये कौन कौन है आपके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है,
गोपाल स्वामी अयंगर है, कृष्ण स्वामी अय्यर है, के एम मुंशी है, सैयद मोहम्मद सदुल्ला है, माधव राव है। लेकिन ये लेटर रिप्लेस हो जाएंगे, कौन करेंगे इनको? बी एल मित्तल करेंगे, वो रिजाइन टू इल हेल्थ। फिर टी टी कृष्णाचारी है एंड ही वाज रिप्लेस्ड, ही रिप्लेस्ड किसको करते हैं? डी पी खैतन को करते हैं। ये दोनों जो माधव राव है और कृष्णाचारी है किसको करेंगे? बी एल मित्तल और डी पी खैतन करेंगे। किस दिन होता है? अगस्त 29 1947, अगस्त 29 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी। Now, the drafting committee, after taking into the consideration the proposal of the various committee, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. So, the drafting committee कितने टाइम लेता है? तो 141 days में आपको कंप्लीट करके देता है, 141। ना उससे पहले यहाँ आना चाहिए, हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। Later, a provision in this regard was made by 58 Amendment of 1987. This amendment inserted new Article 394A in the last part of the Constitution, that is Part 22. Part 22 में करते हैं. And this article contains the following provision. क्या है? The translation of Constitution in Hindi language, the modification which was necessary to bring it in conformity with the language, style, and terminology adopted in the authoritative text of the Central Act in Hindi can be made in it. All amendment of the Constitution made before such publication should be incorporated in it. The translation in Hindi or of every amendment of the Constitution made in English. The translation of Constitution and its every amendment of public shall be construed to have same meaning as the original text in English. Translation of Constitution and every amendment published shall be deemed to be, or for all purpose, it authoritative text in Hindi. Now, its important facts को देखिए. Elephant was adopted as a symbol of seal of assembly. B. N. Rao, legal advisor of the assembly. H. V. R. Iyengar, secretary to the Constituent Assembly. S. N. Mukherjee, chief draftsman of the Constitution of Constituent Assembly. Prem Bihari Narayan Rajada was the calligrapher. So, Narayan Rayzada was the calligrapher of Indian Constitution. Original version was beautified and decorated by the artists from Santiniketan, including Nand Lal Bose and Bihor Raman Manohar Sinha. Now, calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by Vasant Krishna Vaidya and elegantly decorated and illuminated by Nandlal Bose. Now, कुछ criticism भी है, वो देख सकते हैं. Not a representative body, again not a sovereign body, time consuming, dominated by Congress, lawyer politician domination, dominated by Hindus. Now हम लोग थोड़ा enactment of the constitution को समझते हैं. So B. R. Ambedkar introduced the final draft of the constitution in assembly 4 November 1948, first reading, and the assembly had general discussion on it for 5 days. Second reading आपको 15 नवंबर को होता है and third reading 14 November 1949. So the constitution adopted on the November 26, 1949 contained a preamble, 395 article, 8 schedule. तो इस चीज को रखना याद, 395 article, 8 schedule. ठीक है, अभी तो 12 हो चुका है, तो इस चीज को समझना है कि 4 लेटर ऑन होता है, लेकिन जब एडॉप्ट होता है तो उसमें से 8 schedule was there. Now, B. R. Ambedkar, the then law minister, piloted the draft constitution in the assembly. Now, B. R. Ambedkar को जो है father of constitution of India कहा जाता है. This brilliant writer, expert and undisputed leader of the scheduled caste, is also known as the chief architect of the constitution of India. नेहरू के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, आसफ अली थे, के एम मुंशी, अयंगर, शाह गडगिल, हुमायूं कबीर एंड के संथानम. ठीक है ना, इस चीज को देखिए, जो इलेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, तो वहाँ कांग्रेस को 208 सीट्स आते हैं, मुस्लिम के पास 73 है, यूनियन पार्टी के पास 1 है, मुस्लिम 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंट 8. So here we are done with this chapter, that is making of the constitution. Thank you.